Hey guys, this job notification is regarding Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited और उन्होंने vacancies निकाली है. The vacancies are for assistant manager and other positions, that is station controller cum train operator, maintainer for electrical, S&T and civil. Okay, so for assistant manager the vacancies are 6, but for station controller cum train operator the vacancies, see the number of vacancies, 186. Okay. So let's talk about these positions. First of all, assistant manager, the salary is very good, 50,000 to 1,60,000. The pay scale is comparable to PSUs. Okay, 6 vacancies and 6 vacancies are there, and the eligible branches are electrical, electronics and communication. EC is also eligible with minimum 60% marks, and the age limit is 21 to 28 years. Okay. The next one is station controller cum train operator, जिसमें 186 vacancies है. They have written that 3 years engineering diploma, but there is a good news. They have written here that candidates with higher qualification in respective disciplines can also apply. That means जिनके पास degree है, they also can apply for these positions. Okay, and station controller cum train operator की salary scale जो है, जो pay scale है, that is good. You will get a nice in hand salary. It is 33,000 to 67,300. तो इसके लिए भी आप लोग apply कर सकते हो, and the vacancies are really good. Okay, and for maintainer, if you you desperately want a job, and if you are from civil engineering background as well, because civil के लिए भी 24 vacancies हैं. तो if you are from electrical electronics, then you can apply for these positions, but if you are from civil engineering background, you can apply for maintainer position. If you really, yes, if you want a job, then you may go for it as well. Baki I will post the link of this PDF in the description. तो जो भी details हैं ये तुम PDF में देख सकते हो. Okay, let me tell you कि इसकी starting date क्या है. Starting date is 11th March. So please keep a reminder, एक रिमाइंडर लगा लो कि 11th मार्च को इसका फॉर्म भरना है, एंड द लास्ट डेट इज 2 अप्रैल. तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द लास्ट डेट. अपने को क्या करना है, 11th मार्च पे ये फॉर्म भर देना है. ओके, नेक्स्ट सी दे हैव रिटन दैट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर असिस्टेंट मैनेजर इज इट्स अ 2-stage प्रोसेस, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं उन्होंने, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे तभी तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, दे हैव आल्सो रिटन दैट द कैंडिडेट्स हैविंग अंडरगॉन लेसिक सर्जरी आर नॉट सुटेबल फॉर एनी पोस्ट. तो अगर तुम्हारी लेसिक सर्जरी हो रखी है, देन आई एम सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ दीज पोजिशंस. ओके, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, 3-stage process is there, that is written test, psychometric aptitude test followed by document वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. एंड मेंटेनर की पोस्ट के लिए 2-stage प्रोसेस है, दैट इज रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. ओके, रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या है? फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड स्टेशन कंट्रोलर, फॉर दोज वैकेंसीज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 140, एंड बाकी वैकेंसीज के लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे. 2 घंटे का पेपर होगा, एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. 1/3 marks will be deducted. Okay, the examination centers are written here that you can see in this PDF. I'll post this PDF in the description. Okay, so this was the important information I wanted to tell you about this job notification. Application fees is 590 for general and OBC candidates, and for SC/ST candidates they are required to pay rupees 236. Okay, candidates are required to apply online through upmetrorail.com on 11th March को ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, एंड you have to pay online. This is the method. Any demand draft, check, money order, they will not be accepted. Okay, so guys, there are a lot of vacancies, and if you are from electronics background, I think you should go for it. Okay, and if you are from civil background and if you wish to have a job, if you want a job, you can go for this position as well, but that's your choice. Okay, that's totally your choice. Okay, so this is what I wanted to tell you in this job notification. All the best.